welcome back. So this is going to be the first video of your class 12th chapters. That means we have already seen the basics which are required in your organic chemistry. Okay, whatever from 11th will be required in order to understand this has been dealt in the previous videos. I would love you people to go back and watch those videos and then start learning from this particular video. So in this video I am going to start the class 12th syllabus. That means I am going to start talking from haloalkanes and haloarenes. I am going to talk about haloalkanes and haloarenes. We are going to start this chapter, sir. When I am talking about haloalkanes, halo here is the most important term. Halo means it comes from halogen. We know that halogens are nothing but fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, especially the fluorine, chlorine, bromine and iodine. That is the 17th group in our periodic table. Okay, so now this particular family, any member of this particular family, if it is directly attached with a carbon, that means an alkyl group, then we will call it as nothing but haloalkane. Let us have a look, sir. A simple one I am trying to tell you. Say I am having a carbon atom, and then on this carbon atom, okay, generally all of our halogens will be represented by X. That can be either your fluorine, that can be your chlorine, that may be your bromine, or that may be iodine. So whenever you are having fluorine, chlorine, bromine or iodine directly attached with a carbon atom, okay, or an alkyl group, then we will call it as nothing but haloalkane. Okay, when you are having a straight chain compound, a straight chain carbon, and to that if you are having a halogen attached like this, if it is an aliphatic alkyl group, then we will call it as nothing but haloalkane. In the same way, if you are having a benzene ring, and on this benzene ring if there is a halogen attached, then we generally call them as aromatic halogen compounds. We can call it as nothing but your haloarene. Okay, that is nothing but haloarene. Okay, sir. So whenever you are having a halogen atom directly attached to an alkyl group, we will call it as nothing but haloalkane. And when it is directly attached with a aromatic compound, that means on an aromatic group, if directly the halogen is attached, then we will call it as nothing but our haloarene. Now the one primary thing which you will see over here, जैसे ही ये दोनों compounds का मैंने नाम लिखा, यहाँ पे basic structure मैंने draw किया, one most important thing which you will see is generally when halogen is directly attached with this carbon like this in an aliphatic carbon, that means the halogen is attached with sp3 hybridized carbon. Okay, whereas in here the halogen is attached with sp2 hybridized carbon. That is one most important thing which you have to remember. In the very first video I have talked about the hybridization of carbon atom. Okay, now sir, we understood that whenever a halogen atom is attached with such groups, we will call them as either haloalkanes or we will call them as haloarenes. Now that is okay. Now what are the different types of haloalkanes we are having? So now let us understand this. Sir, depending upon which carbon the halogen atom is attached, we can divide our haloalkanes into primary, secondary or tertiary alkyl halides or haloalkanes. Okay, sir, what is this primary, secondary, tertiary? Let us have a look, sir. If your halogen atom is attached with a carbon which is not attached with any other carbon atom, मतलब और कोई carbon atom के साथ ये carbon attached नहीं है, वो अकेले, और दूसरे तरफ से सिर्फ हाइड्रोजन्स हैं या कोई other substituent है, but there should be no other carbon atoms, then we will call it as nothing but a primary alkyl halide. In the same way, or if the carbon atom is directly attached with only one carbon atom, okay, so there is a halogen which is attached with a carbon and this carbon is attached with only one carbon atom,
then even in that case we will call it as nothing but a primary alkyl halide. So what is the primary alkyl halide? I'll tell you in a very simple way. Whenever you are having carbon which is directly attached with only one carbon atom, मतलब ना यहाँ पे ये कार्बन जो है वो जितने भी कार्बन के साथ अटैच हो कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को, right sir, please understand this, okay, but the carbon to which the halogen is attached, that must be directly attached with only one carbon atom, then we will call it as nothing but a primary alkyl halide or a primary haloalkane. ओके, सो इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक है तुम्हारा मिथाइल, मिथाइल पे डायरेक्टली अगर हेलोजन अटैच्ड होता है, CH3 के साथ डायरेक्टली अगर हेलोजन अटैच्ड होता है वो प्राइमरी बोलते हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली कोई और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड नहीं है. Now let us come down to secondary alkyl halide. Sir, what do you mean by secondary alkyl halide? That means whenever you are having a carbon atom and if this carbon atom is attached to a halogen atom, now this carbon, if it is attached with two other carbon atoms directly, okay, then we will call it as nothing but secondary. Okay, the given carbon to which the halogen is attached, it must be directly attached with only two, not more than two, only two carbon atoms directly. ये कार्बन जो है वो कितने भी कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हो सकता है आगे जाके, we are not worried about it. Alright sir, so that is called as nothing but a secondary alkyl halide. In the same way, if I go for tertiary, now you must have understood by now. So if we are having a carbon atom which is directly attached with three other carbon atoms, the halogen is attached with a carbon and this carbon is directly attached with three other carbon atoms, then we will call it as nothing but tertiary alkyl halide. Okay sir, right. So I'll just give you one question. Okay, so let me see if you people can identify how many primary, how many secondary and how many tertiary alkyl halides are present, means how many tertiary carbons are present in here. Okay, so तुम लोग पूछोगे मुझे, sir, if a carbon atom is directly attached with four other carbon atoms, so this is carbon, 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 all the four sides if it is attached, then we will call it as a quaternary carbon. We will call it as nothing but a quaternary carbon atom. Okay, so let us now have a look at it. So see sir, I am giving you a question right now. So you see, if I am having this is hydrogen, this is CH2 and this is CH3, and here I am having one more hydrogen, here I am having one hydrogen, here I am having CH3, here I am having CH2, CH3, here I am having a CH3, and here I am having one more CH3. Now what I want you people to do is count how many primary, how many secondary, how many tertiary carbons are present in this particular molecule and do comment it in the comment section below. We will surely answer this in our next video. Okay, so in this way you people can easily identify what are primary, what are secondary, what are tertiary alkyl halides. That's so simple, isn't it? Now we will go for the second type of classification of our alkyl halides, that is our haloalkanes. Now what is that sir? So depending upon the number of halogen atoms, depending upon the number of halogen atoms attached to the carbon atom, you see, I may be having only one carbon atom attached to the, only one carbon atom I may be having that will be attached directly to the carbon, that means the alkyl group. Say for example like this, I have C, C, C and there is only one halogen attached. Such compounds we will call them as nothing but monohalides. What do we call them as? Monohalide. Okay, in the same way, if I am having some number of carbon atoms and there are two halogens which are directly attached, then we will call them as nothing but dihalides. In the same way, if there are three carbon atoms which are directly attached, that means three halogen atoms that are directly attached, one over here, one over here, one over here, anywhere. Okay, so if I am having three halogen atoms directly attached, then we will call them as nothing but trihalides. What do we call them as? Trihalides. So in this way, depending upon the number of
halogen atoms attached, again we can classify our haloalkanes into mono, di, tri, tetra and so on. Polyhalides means there will be more than 4 or more than 2. Okay, more than 2, we can call it as nothing but polyhalide. Okay, I hope you people have understood till here. We will just move ahead in order to understand a little more. Just have a look. Okay, sir, depending upon number of halogen atoms, you have explained us that how we are going to classify our alkyl halides. They can be mono, di, tri, tetra and so on. Sir, among dihalides, now this is a very interesting thing actually. Among dihalides, again you will see a classification. ओके, दो हेलोजन एटम अगर एक एल्काइल ग्रुप में अटैच्ड होता है, दो वी कैन कॉल इट एज डाइहेलाइड, बट उसमें भी दो अलग अलग टाइप के डाइहेलाइड्स हैं. लेट अस सी सर, ये कौन से दो अलग अलग टाइप के एल्काइल हेलाइड्स हैं हमारे लिए. ओके, डाइहेलाइड्स कौन से दो टाइप के होते हैं. सो लेट अस हैव अ लुक. सो व्हेन आई एम सेइंग दैट वी आर हैविंग अ डाइहेलाइड, से द डाइहेलाइड कैन बी लाइक दिस, हेलोजन and a halogen on the consecutive carbons. एक consecutive मतलब इसके just next वाले कार्बन पे एक और halogen हो सकता है, और halogens directly एक ही कार्बन एटम पे डायरेक्टली अटैच्ड हो सकते हैं. आ रहा है समझ में सर आप लोगों को, राइट? सो इन दिस वे इफ द हेलोजेंस आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम, सिंगल कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन अगर अटैच्ड है, देन वी विल कॉल देम एज जेम डाइहेलाइड्स. We will call them as gem dihalides, and if they are attached to consecutive carbon atoms like this, then we will call them as vicinal dihalides. We will call them as what, sir? Vicinal dihalides. Simple? Okay. Depending upon, see, I'll try to tell you over here. Again, depending upon the carbon to which the halogen is attached, okay, we can again classify our halides into allylic, vinylic, arylic, okay, so benzylic. So what I'll do is, in order to make you people a little easy for you people, what I'll do is this. Here I'll write benzylic, and here I'm going to write I'll write arylic. What will I write, sir? I'll write arylic over here. Okay, so you see arylic. Now what are these? See, if you are having a halogen atom directly attached to a sp3 hybridized carbon atom, and if this hybridized atom is directly attached with a sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अगर हमारा हेलोजन एटम जो है ऐसा एक कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, दैट मीन्स वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? X must be attached with a sp3 hybridized carbon, but that carbon must be directly attached with another sp2 hybridized carbon atom. Then such type of position we will call it as nothing but allylic halides. ओके, एलाइलिक पोजीशन, दैट मीन्स एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे डायरेक्टली एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा और उस पे तुम्हारा हेलोजन अटैच्ड होगा. वी विल कॉल इट एज नथिंग बट एलाइलिक हेलाइड्स और एलाइलिक पोजीशन, दिस वन. Okay, in the same way, sir, what is vinylic then? So let us have a look, sir. What is vinylic? So please see, vinylic means whenever you are having a sp2 hybridized carbon atom and to this carbon atom directly if the halogen is attached. अगर एक sp2 hybridized carbon atom पे directly एक halogen attached है, then we will call it as nothing but a vinylic position. Simple and easy, sir. Now let us understand what is the meaning of benzylic position. See, whenever you are having a benzene ring and to this if there is a carbon attached and here if there is one halogen attached, then we will call it as nothing but our benzylic position. बहुत सिंपल है ना. मैंने एलाइलिक के नीचे देखिए, आप लोग देखे होंगे तो मैं एलाइलिक लिख रहा था, फिर मैंने बेंजाइलिक लिखा. दैट इज बिकॉज in benzylic again the halogen is attached with sp3 hybridized carbon which is directly attached to a sp2 hybridized carbon atom.
So simple and so easy, sir, right? So what is happening here is मेरे पास हेलोजन डायरेक्टली अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है और वो अगर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है, तो आप लोग बोलेंगे तब एलाइलिक और बेंजाइलिक में डिफरेंस क्या है सर? देखिए, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग. ओके, दिस sp2 hybridized carbon must be a part of benzene ring. Okay, then we will call it as nothing but the benzylic halide. Okay, the benzylic position. Now let us have a look, sir, what is arylic. ओके, जैसे यहाँ पे हेलोजन डायरेक्टली अगर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे अटैच्ड है तो विनाइलिक बोल रहे हैं. उसी तरह से इफ यू आर हैविंग अ बेंजीन रिंग और एनी एरोमेटिक रिंग, एनी एरोमेटिक सिस्टम, एंड उस एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे डायरेक्टली अगर हेलोजन अटैच्ड है, इवन इन दैट केस वी कैन कॉल इट एज नथिंग बट आर एराइलिक पोजिशन और एराइलिक हेलाइड्स. ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. सर मैंने क्या बताया यहाँ पे, व्हाट इज विनाइलिक हेलाइड, व्हाट इज एलाइलिक हेलाइड, व्हाट इज बेंजाइलिक हेलाइड एंड व्हाट इज एराइलिक हेलाइड. इफ यू हैव अ क्लोजर लुक यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपर्ली. ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है sp2 sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन कैसे क्या कर रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, गो बैक टू माई वेरी फर्स्ट वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड कार्बन and about carbon's hybridization. Okay, right, now I'll move a little more ahead in order to talk about the functional group in your haloalkanes and haloarenes. Okay, the site of reactivity and the functional group हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे सर अभी. So let us have a look, sir, what exactly is the functional group, what is the site of reactivity, and how does our haloalkanes and haloarenes react. We are going to see these things. Okay, right. So whenever I am saying an haloalkane, आप लोगों को बहुत क्लियरली पता चलता होगा सर एक हेलोजन अटैच्ड है हमारा कार्बन का एक एल्काइल ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप में एक हेलोजन अटैच्ड है. यस और नो? राइट. सो लेट अस हैव अ लुक, सर कैसे अटैच्ड है. यहाँ पे अगर कोई रिएजेंट आता है अटैक करने के लिए, एक इलेक्ट्रोफाइल या एक न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करने के लिए, तो वो कैसे अटैक करने वाला है. ओके, कौन सा पोजीशन पे वो सबसे पहले अटैक करेगा. ओके, ये हम लोग देखेंगे. वो बॉन्ड क्लीव कैसे होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे, राइट, इन दिस पर्टिकुलर थिंग हियर. ओके, सो लेट अस हैव अ लुक. से what did I say, sir? Haloalkanes are nothing but whenever a halogen atom is attached directly with a carbon, then we will call it as nothing but our haloalkane. Now as the carbon is sp3 hybridized, आप लोगों को clearly पता होगा sir that the structure of this will be nothing but tetrahedral. The structure of this is going to be nothing but tetrahedral. Now there is one important thing which we have to discuss. What is that? As halogens belong to the 17th group, they are generally electronegative in nature. That means, what is electronegativity, sir? They have the capacity to pull the electrons towards themselves. They have the capacity to pull the electrons towards themselves because उनका size, atom का size काफ़ी छोटा होता है. Nuclear force of attraction, effective nuclear charge, मतलब last electron को बहुत फोर्सफुली पुल कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, जो इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली इक्वली शेयर्ड है हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो क्या होगा, द सिमेट्री विल बी डिस्टर्ब्ड और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ थोड़ा शिफ्ट होंगे, पूरी नहीं, यहाँ पे डोनेशन नहीं होता है, थोड़ा सा शिफ्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ. तो जिसके वजह से होगा क्या, देयर विल बी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, देयर विल बी अ partial negative charge on halogen and there will be a partial positive charge on your carbon. Okay sir, this partial negative and partial positive charge on the carbon and halogen makes this CX bond to be reactive. Okay, आप लोग खुद देखिए यहाँ पे sir, if an electrophile approaches this, it clearly knows that it is going to attack on the delta negative, and if a nucleophile is approaching, then the nucleophile clearly knows it has to attack directly on the delta positive over here. Okay, so it is so clear and so easy, sir, right? So now what is happening, sir? If I want to see the function
functional group over here. My functional group is nothing but halogen and the site of reactivity is obviously, मतलब जब भी रिएक्शन होगा तो सबसे पहले कहाँ पे इफेक्ट करेगा, यहाँ पे, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड पे इफेक्ट करेगा। सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है आपका कार्बन और हेलोजन के बीच में। आई होप आई एम क्लियर विद टिल हियर सर। तो सर आपने तो बताया कि हम लोगों का जो हेलोजन है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो सर क्या आप हम लोगों को बता सकते हैं कि among CF, among CCl, यहाँ पे CCBr, among CI, इनमें से अगर मेरे पास है, ये चारों एल्काइल हैलाइड्स है मेरे पास, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा और क्यों होगा? सर क्या ये आप बता सकते हैं? जरूर बता सकते हैं हम लोग। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू आंसर दिस? जैसे जैसे हम लोग 17th ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इज द साइज ऑफ द एटम कीप्स इंक्रीजिंग। इन द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो वी हैव सीन सर, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज कीप्स इंक्रीजिंग। तो आपका फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक एटॉमिक साइज क्या होगा सर? इंक्रीज होते जाएगा। जब एटम का साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कार्बन के साथ उसका जो बॉन्ड है, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बिकम्स लेस। आ रहा है समझ में? दैट मीन्स अगर मैं कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कंपेयर करूंगा तो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी लार्ज है एज कंपेयर टू कार्बन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन एंड आयोडीन। ओके, इफ आई कंपेयर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है सर? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड द हेलोजन। ओके, तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। कार्बन क्लोरीन उससे थोड़ा आसान, ओके, कार्बन ब्रोमीन उससे भी आसान, कार्बन आयोडीन सबसे आसान। तो इसीलिए अगर किसी ने आप लोगों को आज के बाद हेलोजन्स, हेलोएल्केन्स दे दिया और बोला कि सेम कार्बन सेम हाइड्रोजन इधर अटैच्ड है, सेम एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सबसे पहले रिएक्ट करेगा, तो दैट विल बी आयोडाइड एंड द लीस्ट वन विल बी योर फ्लोराइड। समझ में आ गया आप लोगों को? राइट। सो एज वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द साइट ऑफ रिएक्टिविटी एंड द फंक्शनल ग्रुप का साइट के बारे में हम लोग समझ गए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज नॉमेनक्लेचर, जो कि मैंने एक अलग से नॉमेनक्लेचर का कंप्लीट वीडियो है, बट यहाँ पे भी अगर तुम लोगों को मैं बस बेसिक चीज बता दूं सर, व्हेनेवर एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग अस हैलोएल्केन्स। ओके, से मेरे पास अगर एक कंपाउंड है ऐसा C, सर मेरे पास यहाँ पे एक Cl है, ये CH3 है, ये H है और यहाँ पे एक और CH3 है और यहाँ पे CH3 है और ये एक और H है। सर इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? सर हैलोएल्केन। ओके, सो एज वी नो ऑलरेडी सर, यू हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing the substituent and the substituent or our functional group in this case must have the least carbon count। तो मैं अभी जो काउंटिंग है मैं अपना स्टार्ट कर सकता हूँ either from left or from right। मैं अगर लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4, टॉप से भी स्टार्ट कर सकता हूँ 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 का जा रहा है। बट अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, हेलोजन को 3rd नंबर मिल रहा है। बट अगर मैं राइट से स्टार्ट करता हूँ, लेफ्ट और राइट वीडियो में चेंज हो सकता है सर, आप लोग बस देख लीजिए। अगर इस कार्बन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं देन इट इज गोइंग टू बी एट द 3rd पोजीशन। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, इस कार्बन से अगर स्टार्ट करता हूं 1 2 2nd पोजीशन। मैं हमेशा चाहूंगा मेरा फंक्शनल ग्रुप को जो है लीस्ट कार्बन काउंट मिले, ओके, जो स्मॉलेस्ट काउंट होगा। तो इसका नेमिंग मैं कैसे करूंगा? 1 2। Okay, first whenever you are naming the compound, the first thing which you have to do is write the parent name 1 2 3 4 1 2 3 4, so it is but। ओके, एंड देन एट द ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स। देखो तो ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पे ये एक सब्सटीट्यूएंट है और पूरा मेरा चेन में ये एक एंट्री नहीं हो रहा है, मतलब इसका नंबरिंग हम लोग नहीं ले रहे, तो ये भी एक सब्सटीट्यूएंट है। तो कहाँ सब्सटीट्यूएंट्स हैं? 1 2 2nd पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे कुछ नहीं है। तो 2nd पोजीशन पे भी सब्सटीट्यूएंट है, 3rd पोजीशन पे भी है। तो चलिए 2 और 3। अब सबसे पहले सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो हम लोग लिख देंगे ब्यूटेन।
इसके बाद सेकंड पोजीशन पे क्या है सर, क्लोरो, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कीजिए, सी कम्स फर्स्ट, सो इट इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इट इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल एंड इजी। ओके, आप लोग इस तरह का नेमिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है। आई विल जस्ट मेक वन मोर वीडियो रिलेटेड टू द नॉमेनक्लेचर थिंग। इट इज़ वेरी वेरी इजी सर, यू पीपल कैन सिंपली फॉलो दैट। नाउ सर नहीं, आप थोड़ा इसी में बता दीजिए, अगर हम लोगों के पास ऐसे अगर रहा, if we are having a benzene on which chloro is attached, chlorine is attached, so you can write it as nothing but chlorobenzene. It is very simple, yes or no? Right. Sir, if I am having 1 chloro and there is 1 methyl group attached at second position, you see जहाँ पे functional group है वहाँ से 1 काउंट करेंगे, ये second position है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 मिथाइल। ओके, तो अल्फाबेटिकली अगर मैं जाऊंगा 1 क्लोरो, सी पहले आता है, 2 मिथाइल बेंजीन। ओके, और 1,2 पोजीशन इज अदरवाइज कॉल्ड एज ऑर्थो, सो व्हाट कैन आई राइट सर, ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। Okay, more appropriate name for this, though we are writing this, the most appropriate name for this will be like this, orthochlorotoluene, because benzene with a CH3 is called as toluene. Orthochloro means 1,2 पोजीशन, जहां पे CH3 अटैच्ड है उसके नेक्स्ट पोजीशन पे ही तुम्हारा क्लोरीन अटैच्ड होगा। सो ये पूरा नॉमेनक्लेचर पार्ट जो है हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे सर। सो अभी मैं आगे बढ़ूंगा और आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर आर haloalkanes and haloarenes. Now here comes the special thing about this video sir. One special thing you cannot miss out. सर आप लोगों में से हर किसी का ये डाउट होगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे प्रिपरेशन मेथड्स रहते हैं और इतने सारे टाइप से हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स को बना सकते हैं, तो सर इतने सारे प्रिपरेशन मेथड्स याद कैसे रखें, या हम लोग हर एक का मैन्युफैक्चर मेथड को क्या रटना पड़ेगा? देन द आंसर इज नो. There is no need in order to mug up things in organic. That is the beauty of organic chemistry, sir. That is the beauty of chemistry actually. There are so many logics. Okay, so there is no need in order to simply remember things. Okay, आप लोगों को आदत हो जाएगा, आप लॉजिक वाइज उसको अगर यूज करेंगे। तो मैं अपना सारा प्रिपरेशन मेथड्स कैसे बताने वाला हूँ, ओके, और मैं उन प्रिपरेशन मेथड्स के लिए क्या ट्रिक यूज करने वाला हूं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, दैट इज प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ haloalkanes and haloarenes देखने वाले हैं। ऑलराइट सर, सो टिल देन हैव फन एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।